Hello students, the question is which of the following protocols did aim reducing emission of chlorofluorocarbons into atmosphere? A. Geneva Protocol, B. Montreal Protocol, C. Kyoto Protocol, D. Gothenburg Protocol. So मुझे क्वेश्चन में पूछा ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका एम था टू रिड्यूस एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. सो लेट्स सी ऑल द प्रोटोकॉल्स वन बाय वन. जिनीवा प्रोटोकॉल. जिनीवा प्रोटोकॉल में क्या कहा गया? इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1925. is its aim is to prohibits the use of prohibit the use of chemical and biological, both chemical and biological weapons. Prohibit the use of chemical and biological weapons during war में इनका यूज नहीं कर सकते हैं. सेकेंड इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन इन 1987 and get effective in the 1989. It is again an international treaty and its aim is to reduce the depletion of ओजोन. ओजोन डिप्लीशन को रिड्यूस करना है तो क्या होगा? जो ओजोन डिप्लीटिंग एलिमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करना होगा, सच एस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कंटेंट अमाउंट रिड्यूस करना. क्योटो प्रोटोकॉल is signed in 1992 and its aim is to reduce the emission of greenhouse gases that leads to greenhouse effect, ultimately the global warming. And Gothenburg Protocol. Gothenburg is a place in Sweden and this Gothenburg Protocol was signed in 1999 and its aim is to reduce the amount of gases that causes acidification, eutrophication and disturbs the ecosystem. Acidification, eutrophication and ground level ozone. To reduce the ground level ozone also. So, according to question, the aim to reduce emission of chlorofluorocarbons in atmosphere is the aim of a protocol, Montreal Protocol. So, the correct answer here is option B. Thank you.